Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is our December 2018 module number 2 for legal news for CLAT. I'm sure you are going through this legal news in a proper manner. Last video mein I discussed with you that why legal news is very important. With legal news, what do you gain? You gain vocab. सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, आपको शब्द मिलते हैं, है ना? जो स्टूडेंट काफी सीरियस वे में मेहनत करना चाहते हैं, they try to grasp various things from such kind of discussion. So one, you get vocab. Second, you get to know the kind of principle and the logic behind arriving at a particular decision. Okay, जो आपको लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक कहीं अलग अलग जगह पे अजीब चीजें अगर आती है तो आप उसको करने के काबिल बनते हैं. एंड नंबर 3, यू नो फैक्ट्स. ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ वो आपको यहां से पता चलता है. ओके, सो दिस इज हाउ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू गेट through Pro Talent. Pro Talent is possibly the only channel in the country which provides such kind of wonderful legal news for CLAT. We are really happy to share such kind of information to large number of students who are basically coming from remote areas. दूर दूर जगहों पे जो हमारे students बैठे हैं, ठीक है, I know that large number of people have also purchased our test series. People from Arunachal Pradesh, people from Jammu Kashmir, ठीक है, people from Nagaland, है ना, people from let's say Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and the remote villages of UP, Bihar, they have also purchased and our study material and our test series. Recently we launched our offline booklet, that is test booklet. It has wonderful response and large number of you have registered. So I must thank all of you for doing that, and we will give you a very good support for your preparation. Okay, चलिए, great. So आज हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2. लास्ट टाइम वी डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज आइटम, ठीक है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था. आज भी हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल रहा है इधर, दैट इज 4th इश्यू कॉल्ड जुडिशियल लॉ मेकिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? दिस डेवलपमेंट केम आफ्टर Supreme Court's decision on Sabrimala case. I'm sure we discussed about Sabrimala case. Please go through that. Okay, we have covered all important issues related to important Supreme Court judgments. We have covered Aadhaar, we have covered privacy, we have covered Sabrimala, we have covered adultery. ठीक है, we have covered LGBT. So ये सबके ऊपर हमने बात करी है. Please go through those videos. Okay, ये वीडियोस आपको लीगल न्यूज वाले पार्ट में मिलेगा. ठीक है, आप हमारी protalentdigital.com पे जाइए और वहां पे आपको ये वीडियोस इजीली अवेलेबल होंगे, आप ब्राउज भी कर सकते हैं. ओके, चलिए. सो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना सबरीमाला पे डिसीजन दिया, ठीक है, एंड देयरफॉर इट हैड इग्नाइटेड दिस नेशनल डिबेट अबाउट द लिमिट्स ऑफ जुडिशियल पावर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्लियामेंट डिसाइड करे दैट हैज टू बी सुप्रीम. उसके अंदर ये जुडिशियरी का अगर कोई डिसीजन आता है उसकी वैल्यू कितनी, और ये बिल्कुल डिबेटेबल कहानी है. ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, बट इट शुड ऑल्सो नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरिन किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करने चाहिए. सबरीमाला के केस के अंदर विमेन के फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, वो वायलेट कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया उनको अलाउ कर देना चाहिए. पर पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेचर है वो ये बोलते हैं कि भाई उनको अलाउ नहीं करना चाहिए. सो वहां पे ये पंगा चालू हुआ, वहां पे ये लड़ाई चालू हुई, और ये लड़ाई को जुडिशियल लॉ मेकिंग कहते हैं कि जहां पे कोर्ट अपनी तरीके से जो डिसीजन देते हैं वो एक तरीके से लॉ बन जाता है, एंड देयरफॉर इट इज जुडिशियल लॉ मेकिंग. नाउ व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर जुडिशियल लॉ मेकिंग? लेट्स सी दैट व्हेन कोर्ट विल कम टू मेकिंग अ लॉ primarily in a scenario where there is a gap, where there is a legislative gap, जहां पे लेजिस्लेटिव
कोई तरीके से लॉ बना नहीं पाया है, then court बोलती है it is our duty to make law. The court has justified judicial lawmaking in, we can say, seeking to fill the gaps in legislation as a part of interpretative exercise which is exclusively within its order. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये बिल्कुल पावर आता है that they can interpret certain things, और वो इंटरप्रिटेशन का कोई एक लॉ बन जाता है. So it is their, we can say, purview. Also, it is creating new rights. The court's expansive and creative exercise of judicial power has been accepted by the nation primarily because of its stellar contribution towards broadening human rights. Court has been doing wonderful work of expanding human rights. हमारे अधिकारों को वो और broad करते हैं, and thereby they are, we can say, considered to be good. It is part of doctrine of progressive realization of rights. ये जो latest LGBT, privacy, adultery, आधार, ये सबके related जो उन्होंने अपने judgment दिए थे, they are basically called progressive realization of rights. ठीक है. And also judiciary, or that is court, is a protector of constitutional morality. So by reading the right of dignity into article number 21 to pinnacle of rights hierarchy, the court has validated its role as an arbitrator in a constitutional morality, a protector of constitutional morality. Okay, and that's the reason why court comes into power and in the picture to, we can say, go for judicial lawmaking. There are people who are opposing this. What is their argument? Their argument is, they say it is a violation of separation of power doctrine. So I'm sure you understand there is a separation of power. That means law बनाने का power legislature के पास है, judiciary के पास सिर्फ law interpret करने का power है. तो judiciary law interpret करके अगर law बना रही है, so then it is a violation of this separation of power. Another argument which is saying that lawmaking is essentially the function of legislature, and therefore judiciary cannot come into this scenario. And court should only interpret law. The court should not make law, and it is against democracy. This is how the argument is coming. And I think these are also valid argument. These are valid argument. Okay, let's see few more arguments. Judicial overreach is basically not necessary, although there are earlier instances of judicial activism. जब judiciary अपने purview से थोड़ा बाहर जाकर law बनाने का काम करती है, उसको judicial activism भी कहा जाता है. So they were connected with fundamental rights. वहां तक बात बराबर है, but nowadays judiciary has started in interfering with the governance issue, and therefore there is a big challenge, and there is no constitutional backing for judicial activism. There is no constitutional backing for judicial review. There is a constitution backing, but for judicial activism there is no, you can say, backing, and there is confusion. If judges are free to make law of their choice, it could lead to uncertainty in the law and a chaos, as every judge will make their own law, and therefore judiciary should trade with circumspection when entering into judicial lawmaking process. Any such step should be the measure of last resort. अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो करना चाहिए, उसके बगैर इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. This is what the conclusion we can make when we talk about this Sabrimala case or any such case जहां पे judicial overreach हो रहा है. Yes, so I hope you have understood the idea of judicial lawmaking. You have learned new words like judicial activism. You also know judicial review, okay, and you also understood the both arguments for and against and what should we go. Okay, chaliye, great. So this is the issue number 4. Coming to issue number 5, says Andhra Pradesh and Telangana to have separate high court. So there is an order of the president. So after Supreme Court's order, the center has to notify the bifurcation of AP and Telangana High Court by January 1, 2019. So that is what President of India ordered. Okay, so there's a separate power.
So there is a, अभी तक तो common high court थी. So Hyderabad High Court was a common high court. Now there will be two separate high courts. So thereby total, how many high courts we will have? Some around 25 high courts will have. So what is the legal basis of this decision? Presidential notification quoted in article number 124 of the constitution, which provides for the high court for each state. The presidential notification, so ये बिल्कुल काम का है. आर्टिकल नंबर 214 बिल्कुल याद रखिएगा ये, ठीक है. So the president notification also pointed out that under Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, both states were to have a common high court till separate ones were formed. So this is how the legal basis which is coming. Where is the seat of the high court? The principal seat of Andhra High Court will be at Amravati, which is the capital of the state, while High Court of Hyderabad will function separately for a state of Telangana. Okay, and what is the strength? High Court will have 16 High Court judges, including Justice Ramesh Ranganathan, who was the Chief Justice of Uttarakhand, will become the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, while the new Telangana High Court will have a sanctioned strength of 10. Okay, so this is what you should be knowing. इन सब चीजों के ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकते हैं. कौन से आर्टिकल के मुताबिक ये सेपरेट हुआ, कहां पे किसकी सीट अवेलेबल है और क्या स्ट्रेंथ है, ये तीन चीजों के ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट द इश्यू नंबर 6. इश्यू नंबर 6 कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल. सो व्हाट वाज इन द न्यूज? द न्यूज पार्ट वाज देयर वाज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल. इट विल बिकम लॉ once adopted by Rajya Sabha and will replace Consumer Protection Act 1986. Okay, so that way it will be very important law. The legislation had not been amended for 32 years and thereby complete changes are needed, and now consumer rights have been strengthened by this new Consumer Protection Bill. Okay, so what is the provision of the bill? Overall, Consumer Protection Bill provides for recall of faulty products, allows buyers to seek compensation for defective items or deficiency in services, and prescribes penalty for manufacturing or selling adulterated item. So this is what the overall provision. What is the jurisdiction clause? So bill provides for consumer to file complaints with the Consumer Commission at the place of residence or work. Okay, and not from where the purchased product are or they are available at a service. Okay, so basically ये हो गया that in case there is no clear agreement, then the jurisdiction will be in the place where you are residing or the work. And what is the constitution of CCPA? CCPA is a Central Consumer Protection Authority. So that is a new body which will set up, which will have power to take suo motu cognizance. What is the meaning of suo motu cognizance? Suo motu, self-motivated cognizance. Okay, खुद ही वो समझ सकते हैं कि ये गलती हो रही है, तो इस ऑफेंस और इस माल प्रैक्टिस को कैसे रोका जाए. And the Act on Consumer Complaints to act against the violator. It will also have a power for class action complaints. So there is a class action suit. आपको पता होगा that मैगी के ऊपर क्लास एक्शन सूट चालू हो गया है. नाउ व्हाट इज क्लास एक्शन सूट? क्लास एक्शन सूट का मतलब हो गया ज्यादातर कंज्यूमर के बिहाफ में एक बंदा, ठीक है, सबके बिहाफ में केस करता है और फाइनली जो भी जजमेंट आएगा, अगर बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को सेम बेनिफिट मिलेगा. ओके, सो दिस इज हाउ द सिनेरियो वुड बी. ओके, सो देयर इज अ रिड्रेसल फोरम. सो देयर इज अ न्यू मेजर प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. ये पहले भी था. There is a Consumer Protection Council will also be set up at district, state and national level, and there is a financial jurisdiction has been enlarged. Okay, so अब क्या हो गया है? So पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट 20 लाख के ऊपर थी, ठीक है, अब वो हो गया 1 करोड़ तक की कंप्लेन वो लोग डील कर सकते हैं. Few more information about it. There is a celebrities and manufacturers liability. So bill also provides for the provision of imposing fines on celebrities for endorsing false or misleading advertisement, and there is a penalty including jail term
for the manufacturers for committing any kind of offense. New technology and consumer. So it is also protecting people under e-commerce and online shopping, and there is a penalty for or jail term has been linked for impact of adulterated product on human health with proposal of 7 years jail to life imprisonment with at least 10 lakh of fine if there is a death which is happening. Okay. Now these are the provisions which are there. There are people who are opposing this bill. Now why are they opposing? It says it is giving excessive power to the bureaucracy. So consumers को benefit देने के लिए bureaucracy के हाथ में काफी ज्यादा power दे दिया है, and there is no sunset provision. Okay, that means ये particular issue कब खत्म हो जाना चाहिए. कोई बंदा कोई 2012 में कोई प्रोडक्ट लिया and he brings out issue by 2024 तो भी ये चल सकता है. So therefore there has to be a kind of bureaucracy के मुताबिक sunset law होना चाहिए. It is against the federalism. So that means the legal structure which says that कि ये बिल आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं. So भैया जो फेडरल स्ट्रक्चर था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट के जो लॉ चलते थे उसका क्या, अब सब कुछ सेंट्रल के पास हो गया तो स्टेट के हाथ में कोई पावर अब रहा नहीं. इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है. सो दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट कमीशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड. Those commission are judicial member while law making authority is a different authority. अब ये दोनों एक तरीके से सेम हो गए. So separation power हुआ नहीं है, and there is a lack of clarity over function. State or National Consumer Protection Council, they are headed by Ministry of in charge. अब उसके बारे में कोई बताया नहीं है कि कौन ये पावर, मतलब जो काउंसिल का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा या वो इलेक्टेड मेंबर होगा. तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है. सबसे बड़ा मुझे जो दिक्कत लग रहा है, दैट इज एक्सेसिव पावर इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है. सो ये परेशानियां कंज्यूमर प्रोडक्शन बिल के अंदर है. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल ऑफ दिसंबर मंथ. दिसंबर मंथ के ये दोनों मॉड्यूल हमने कंप्लीट करे. प्लीज गो थ्रू देम. दे विल गिव यू वंडरफुल सपोर्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम डू नॉट मिस आउट टू परचेज अवर protalentdigital.com के ऊपर जाकर हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे स्टडी मटेरियल को परचेज करना मिस ना करिए. ओके, चलिए, ग्रेट. So with this, I'm closing this, and share this video to large number of your friends. Okay, thank you very much and all the best.